I have a master degree in English. गलत फिक्रा है क्योंकि करेक्ट फ्रेज a master's degree और a bachelor's degree है, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा I have a master's degree in English. He is studying for a degree of science. Incorrect sentence है क्योंकि जिस सब्जेक्ट की डिग्री लेनी हो उससे पहले ऑफ नहीं बल्कि इन यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट सेंटेंस इस तरह होगा He is studying for a degree in science. He has obtained a master's degree. गलत फिक्रा है क्योंकि खास मायनों में डिग्री लेने के लिए obtain नहीं बल्कि do a degree, take a degree या फिर get a degree यूज करते हैं, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा He has got a master's degree. The demand of computer has increased. गलत फिक्रा होगा क्योंकि डिमांड ऑफ नहीं बल्कि डिमांड फॉर दुरुस्त है, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा The demand for computer has increased. We need a description about a new house. ये भी गलत फिक्रा होगा क्योंकि किसी चीज की डिस्क्रिप्शन के लिए preposition about नहीं बल्कि of यूज होती है, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा We need a description of a new house. He described everything in details. गलत फिक्रा है क्योंकि करेक्ट फ्रेज in details नहीं बल्कि in detail है, इसलिए सही फिक्रा ऐसे होगा He described everything in detail. They were divided in groups of 5. ये गलत फिक्रा है क्योंकि divide के बाद preposition in नहीं बल्कि into यूज होती है, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा They were divided into groups of 5. Whenever I doubt about it, I question him. ये गलत फिक्रा है क्योंकि करेक्ट फ्रेज in doubt about something है, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा Whenever I'm in doubt about it, I question him. It is no doubt that rich have wings. Incorrect sentence है क्योंकि सही फ्रेज there is no doubt है, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा There is no doubt that rich have wings. It can be used easily. ये गलत फिक्रा है क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस को यूं अदा करना ज्यादा बेहतर है It is easy to use. He emphasized on the importance of reading. ये गलत फिक्रा है क्योंकि emphasize के बाद preposition नहीं यूज करते,
اس لیے صحیح فقرہ یوں ہوگا. He emphasized the importance of reading. I entered the train. یہ غلط فقرہ ہے کیونکہ ٹرین ہوائی جہاز یا بحری جہاز میں داخلے کے لیے get on یا board استعمال ہوتا ہے. اس لیے صحیح فقرہ ایسے ہوگا. I got on the train. Unfortunately, he couldn't enter university. یہ غلط فقرہ ہے. دراصل کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے انٹر نہیں بلکہ گیٹ انٹو یوز ہوتا ہے. اس لیے صحیح فقرہ یوں ہوگا. Unfortunately, he couldn't get into university. He could not pass in the exam. یہ غلط فقرہ ہے کیونکہ جب ہم ایگزام میں پاس یا فیل ہونے کی بات کریں تو پریپوزیشن ان یوز نہیں ہوتی. اس لیے صحیح سینٹینس اس طرح ہوگا. He could not pass the exam. I will explain you later. یہ غلط فقرہ ہے کیونکہ جس شخص کو ایکسپلین کرنا ہو اس کو مینشن کرنے سے پہلے to یوز کیا جاتا ہے. اس لیے درست فقرہ یوں ہوگا. I will explain to you later. The house faces to a garden. یہ incorrect sentence ہے کیونکہ کسی چیز کے کسی دوسری چیز کے ساتھ ہونے کو مینشن کرنے کے لیے فیس کے بعد to یوز نہیں ہوتا. اس لیے درست فقرہ یوں ہوگا. The house faces a garden. His most favorite subject is maths. یہ غلط فقرہ ہے کیونکہ فیوریٹ کے ساتھ موسٹ اضافی ہے. اس لیے درست فقرہ یوں ہوگا. His favorite subject is maths. Fill an application form. یہ incorrect sentence ہے کیونکہ فارم وغیرہ بھرنے کے لیے fill in یا fill out یوز کرتے ہیں. اس لیے correct sentence اس طرح ہوگا. Fill in an application form. I will find the secret. یہ غلط فقرہ ہے کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائنڈ نہیں بلکہ فائنڈ آؤٹ یوز کرتے ہیں. اس لیے صحیح فقرہ یوں ہوگا. I will find out the secret. He went to work by foot. غلط فقرہ ہے because we travel by car, by bus, by train and by air, but on foot. اس لیے صحیح فقرہ یوں ہوگا. He went to work on foot. He went to swim on Sunday. یہ غلط فقرہ ہے کیونکہ we go swimming, go shopping, but not to swim. اس لیے صحیح فقرہ یوں ہوگا. He went swimming. He is good in English. یہ غلط فقرہ ہے کیونکہ کسی چیز میں مہارت کے لیے good in نہیں
بلکہ good at یوز کرتے ہیں، اس لیے صحیح فقرہ یوں ہوگا He is good at English. Don't take the habit of smoking. غلط فقرہ ہے، کیونکہ کسی عادت میں مبتلا ہونے کے لیے acquire a habit, adopt a habit, adopt a habit, develop a habit یا پھر get into a habit یوز کرتے ہیں، اس لیے صحیح فقرہ یوں ہوگا Don't get into the habit of smoking. Your future is in the hand of your parents. غلط فقرہ ہے، کیونکہ کسی کے کنٹرول میں کچھ ہونے کے لیے ہم in the hand نہیں بلکہ in the hands یوز کرتے ہیں، اس لیے صحیح فقرہ یوں ہوگا Your future is in the hands of your parents. I honestly say that I'm innocent. غلط فقرہ ہے، کیونکہ I can honestly say ایک fixed phrase ہے، اس لیے I honestly say غلط ہے، تو درست فقرہ یوں ہوا I can honestly say that I'm innocent. How does your teacher look like? غلط فقرہ ہے، کیونکہ جب کسی چیز کے بارے میں تفصیلی معلومات چاہتے ہیں تو how like کے بجائے what like کا کمبینیشن یوز کریں، اس لیے صحیح فقرہ یوں ہوگا What does your teacher look like? I can't tell you how much I'm sorry. غلط فقرہ ہے، اس طرح کے سینٹینسز میں how plus adjective یا پھر how plus adverb یوز ہوتا ہے، much کا استعمال غلط ہے، اس لیے صحیح فقرہ یوں ہوگا I can't tell you how sorry I am. اسی طرح یہ فقرہ Did you notice how much sad he was? غلط ہے اور اسے یوں ہونا چاہیے Did you notice how sad he was? The human's brain works wonder. غلط فقرہ ہے، کیونکہ human عموماً ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ apostrophe s یوز کرنا غلط ہے، درست فقرہ اس طرح ہونا چاہیے The human brain works wonder. He was in hurry to leave for office. غلط فقرہ ہے، کیونکہ جلد بازی میں کوئی کام کرنے کے لیے فکسڈ فریز in a hurry ہے، لہذا in hurry غلط ہوگا، اس لیے درست فقرہ یوں ہوگا He was in a hurry to leave for office. Money is very important for you. غلط فقرہ ہے، کیونکہ کسی چیز کا اہم ہونا important to ہوتا ہے، نہ کہ important for، اس لیے صحیح فقرہ یوں ہوگا Money is very important to you. My first impression about you was negative. غلط فقرہ ہے، کیونکہ impression of something ہوتا ہے، نہ کہ impression about something،
इसलिए दुरुस्त फिक्रा यूं होगा, My first impression of you was negative. He made a good impression to me. गलत फिक्रा है क्योंकि make a good impression on somebody correct phrase है, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा, He made a good impression on me. He could not come in the funeral. गलत फिक्रा है क्योंकि इवेंट्स जैसे वेडिंग, पार्टी, मीटिंग वगैरह से कब इन नहीं बल्कि एट यूज होता है, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा, He could not come at the funeral. They had a good time indeed. गलत फिक्रा है क्योंकि indeed जब एडजेक्टिव को फॉलो करे तो very एडजेक्टिव से कबल यूज होना चाहिए, यानी very प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस indeed। तो फिर करेक्ट सेंटेंस इस तरह होगा, They had a very good time indeed. I'm independent from my parents. क्योंकि independent of something और independent of somebody दुरुस्त है, from का इस्तेमाल गलत है, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा, I'm independent of my parents. Yesterday he stayed indoor. गलत फिक्रा है क्योंकि indoor एडजेक्टिव है, जैसे indoor games, indoor activities में indoor एडजेक्टिव है और दुरुस्त है, जबकि एडवर्ब के तौर पर indoor नहीं बल्कि indoors करेक्ट है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस यूं होगा, Yesterday he stayed indoors. The word workaholic was invented in America. गलत फिक्रा है क्योंकि किसी नए वर्ड या इंप्रेशन के लिए हम इन्वेंट की बजाय coin यूज करते हैं, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा, The word workaholic was coined in America. Those were the happiest days in my life. गलत फिक्रा है क्योंकि happiest के बाद preposition of होनी चाहिए, in दुरुस्त नहीं है, इस तरह correct sentence यूं है, Those were the happiest days of my life. He is looking forward to hear from you. ये गलत फिक्रा है क्योंकि look forward to के बाद ing फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसलिए दुरुस्त फिक्रा यूं होगा, He is looking forward to hearing from you. He has become mad. गलत फिक्रा है क्योंकि पागल होने के लिए become mad नहीं बल्कि go mad यूज होता है, इसलिए सही फिक्रा यूं होगा, He has gone mad. He is mad for cricket. गलत फिक्रा है क्योंकि जब किसी चीज के जुनून को जाहिर करना हो तो mad for नहीं बल्कि mad about या फिर crazy about यूज किया जाना चाहिए, जैसे he's mad about cricket या फिर
He's crazy about cricket. Bread is made of flour and water. गलत फिक्रा है, क्योंकि जब कोई चीज ओरिजिनल मटेरियल से इस तरह बने कि ओरिजिनल मटेरियल मुकम्मल तब्दील हो चुका हो या दोबारा ऑर्गेनाइज ना किया जा सके, तब हम मेड ऑफ की बजाय मेड फ्रॉम यूज करते हैं। इसलिए सही फिक्रा यूं होगा, ब्रेड is made from flour and water। और जब कोई नई चीज बनाने में ओरिजिनल मटेरियल मुकम्मल चेंज ना हुआ हो और आप ओरिजिनल मटेरियल को अभी भी देख सकें, तो फिर मेड ऑफ यूज होना चाहिए। जैसे द टेबल इज मेड ऑफ वुड। और अगर हम किसी चीज के बनाने वाले शख्स या कंपनी को मेंशन करें, तो फिर मेड बाय का इस्तेमाल होता है। जैसे These chairs are made by a poor carpenter. He is enjoying a luxury life. गलत फिक्रा है, क्योंकि a life of luxury फिक्स्ड फ्रेज है, इसलिए इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए दुरुस्त फिक्रा यूं होगा, He is enjoying a life of luxury. He made lots of fun. गलत फिक्रा है, क्योंकि इंजॉय करने के मानी में हैव फन का इस्तेमाल दुरुस्त है और मेक फन गलत है। इसलिए सही फिक्रा यूं होगा, He had lots of fun. The man is mortal. गलत फिक्रा है, क्योंकि जब सारी इंसानी नस्ल का हवाला दें तो दी मैन की बजाय मैन यूज करना दुरुस्त है। इसलिए सही फिक्रा यूं होना चाहिए, मैन इज मॉर्टल। We should help the mankind. गलत फिक्रा है, क्योंकि mankind जब इंसानी नस्ल के लिए यूज हो तो the mankind यूज करना गलत है। इसलिए सही फिक्रा यूं होगा, We should help mankind. He shared happy memories about his childhood. गलत फिक्रा है, क्योंकि memories of something करेक्ट फ्रेज है और memories about something गलत है। इसलिए दुरुस्त फिक्रा यूं होगा, He shared happy memories of his childhood. Do you mind to wait for a while? गलत फिक्रा है, क्योंकि माइंड के बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसलिए दुरुस्त फिक्रा यूं होगा, Do you mind waiting for a while? Lahore is named the city of colleges. गलत फिक्रा है, क्योंकि जब कोई शख्स या चीज किसी खास वजह या नाम से मशहूर हो तो उसके लिए कॉल्ड यूज करते हैं। इसलिए करेक्ट सेंटेंस यूं होगा, Lahore is called the city of colleges. It is no need to tell your story. गलत फिक्रा है, क्योंकि there is no need एक फिक्स्ड फ्रेज है। इसलिए it is no need गलत है। करेक्ट सेंटेंस यूं होगा,
There is no need to tell your story. There is a great need of your help. ये incorrect sentence है क्योंकि need के बाद for preposition use होनी चाहिए, इसलिए correct sentence इस तरह होना चाहिए. There is a great need for your help. I have an urgent need of a job. गलत फिक्रा है क्योंकि किसी चीज की तलब के लिए in need of इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि have a need. इसलिए correct sentence इस तरह होगा. I am in urgent need of a job. Needless to say that he is a liar. गलत फिक्रा है क्योंकि needless to say के बाद that clause इस्तेमाल करना गलत है, इसलिए दुरुस्त फिक्रा यूं होगा. Needless to say he is a liar.